नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं राहुल शर्मा आज एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। तो दोस्तों, जो आज मैं रिएक्शन देने वाला हूं वो है एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी जो पाकिस्तान में काफ़ी फेमस हैं। पाकिस्तान के क्रिकेटर रह चुके हैं। पाकिस्तान में अब राजनीति में एक बहुत ही फेमस चेहरा है। जी हाँ, आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ इमरान खान के बारे में, उनका राइज के बारे में कि वो इंडिया में कैसे हैं, इंडिया में पॉपुलैरिटी कैसी है, उनके इंडिया के चाहने वाले कैसे हैं और इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन कैसे हैं, कैसे रहें। तो देखने के बाद इस वीडियो को पूरा देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटा ना दबाएं। जी धन्यवाद। Cricket superstar, playboy, politician, Imran Khan has been called many things, but now he's earned a new title, Prime Minister. Imran Khan was officially declared the winner of Pakistan's highly contested July 2018 election, despite opposition parties' persistent demands for a recount. But how did this former sports star end up securing the highest political position in a country of almost 200 million people? I'm Alex, this is Now This World, and in light of Imran Khan's recent political triumph, we're taking a look at his rise to power. Let's rewind to March 1992. Khan, then captain of the Pakistan national cricket team, led his team to an unprecedented victory for the country. It was Pakistan's first and only World Cup win to date, and a moment of extreme pride for its citizens. Khan, who was already a celebrated cricketer throughout the 70s and 80s, saw his celebrity status skyrocket even further. Beloved both at home and in the West, he had an active and public social and love life. His marriage to a British heiress in 1995 made international news. Media outlets hailed him a playboy and even sex symbol. But he endeavored to shed that image for that of a more conservative and pious figure. Some experts suggested this came as part of his desire to be taken more seriously in the political arena down the line. But first, he made headlines as a philanthropist, fundraising millions of dollars to open a cancer hospital for low-income patients in honor of his late mother in December 1994. It was around this time, a few years after the World Cup victory, that speculation about Khan's leadership potential started popping up, and it was rumored he was setting his sights on a political career. If I felt that by going into politics I would be able to help my country, I certainly would. But the fact is that in Pakistan, politics is completely corrupt. Soon he would outline what would become his core issue for 22 years, ridding Pakistani politics of corruption. And in 1996, he made it official, founding the Pakistan Tehreek-e-Insaf, or PTI party. Also referred to as the Movement for Justice, the party was branded as an anti-corruption, socio-political movement aiming to create a, quote, self-reliant, modern Islamic republic. But for almost 2 decades, Khan's party saw few victories. He did not become an instant political star, and I think the reason for that is that he was unwilling to go the route that most politicians in Pakistan do, and that's to sort of try to draw on the most powerful people in the country, like the army and other powerful players, and have them help him. In their first general election contest in 1997, the PTI didn't win a single parliamentary seat. The 2002 election was also a relative failure, with Khan winning just 1 seat. These defeats earned him a nickname among his critics, Imran Khan. But he kept pushing. In 2007, he even took his anti-corruption convictions so far as to lead a student protest over the authoritarian crackdown by then military ruler and President General Pervez Musharraf, for which he was arrested. In jail, he went on a hunger strike as a further act of protest. The only way you fight extremism and radicalization is having a genuine democratic system. This is not the way by using your army. His PTI party would boycott the 2008 elections over the lack of an independent judiciary. And Khan's predisposition to blaze his own trail continued to lead him to take some pretty controversial stances. Some critics accused him of failing to firmly crack down on violent extremist groups, even dubbing him with the nickname Taliban Khan. Though Khan has largely condemned violent terrorist attacks, critics argue that he's at times acted as an apologist for groups like the Taliban, blaming the group's presence in Pakistan on U.S. intervention in Afghanistan and urging negotiations with them. If there was a chance of peace talks, we should have grabbed it.
Critics also say he's failed to adequately support Pakistan's persecuted religious minorities by strongly defending the country's blasphemy laws. These laws, the foundation of which were first introduced under British colonial rule, criminalize derogatory remarks against the interpretation of Islam sanctioned by the government. Muslim minority groups in Pakistan like Ahmadis and Shias, as well as Hindu and Christian Pakistanis, have been disproportionately persecuted under these laws. Since the 90s, dozens of people have been murdered after being accused of blasphemy, and others sit on death row over the legal provisions. The PTI has pushed back on this criticism, saying Khan has, quote, repeatedly educated the masses on tolerance for minorities in Islam. He did stand up for religious minorities in certain instances, including in 2013 when a Christian colony was gutted by a mob over alleged blasphemy. But Khan has said these blasphemy laws are not to blame for deaths, and reiterated his strong support for them just weeks before the latest election. और मैं आखिर में ये बड़े वाज़े तौर पे कहता हूँ कि कोई भी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकता जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता. Despite his ongoing contentions, 2013 ended up being his party's most successful year up to that point. The PTI won 27 seats. Still not a major victory, but a step in the right direction for the party. Of course, as he spent more time in the political spotlight, controversies continued. As recently as 2017 and 2018, sexual harassment allegations emerged against him, which Khan has denied or ignored altogether. And Khan continued to pick himself up and campaign. Sports teaches you these, that life is not in a straight line, ups and downs. You take your knock, then each time you pick yourself up from the mat, and then you are successful. He vowed to lift millions of people out of poverty, create jobs, and to improve access to education and health care. He also doubled down on calls to root out corruption and a promise to challenge the status quo. They really see him as the guy that could tackle corruption, just because he's not one of them, so to speak. He doesn't come from the corrupt political class. He's not the product of a family dynasty. He doesn't come from one of the two major political parties. ये सबसे अहम इलेक्शन है पाकिस्तान की तारीख का, क्योंकि एक पहली दफा मौका मिला है कि दो पार्टीज जिन्होंने बारियां ली हैं पिछले 30 साल से, ये मौका है कि स्टेटस को, यानी कि वो पार्टीज जो इस मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठी हुई थी, उनको शिकस्त देने का ये मौका है. Experts say his anti-corruption, anti-elitism, anti-poverty campaigning really resonated with young, middle-class urban voters. As of late 2017, people under the age of 35 accounted for almost half of the country's registered voters. And in July 2018, the Pakistan Tehreek-e-Insaf Party won 115 out of 270 available seats. He had finally achieved a goal that was more than 2 decades in the works. There was mass celebration in the streets. और ये उनके उस मौक़िफ़ की जीत है जो उन्होंने 22 साल से इस अवाम में प्रमोट किया और अवाम आज उनको बड़े ज़्यादा वोटों से नवाज रही है. But later, it would be followed by protest, amid speculation that the powerful military may have played a heavy hand in getting Khan elected, including potentially playing a role in the 2017 ousting of then Prime Minister Nawaz Sharif. The expert we spoke to says Khan's relationship with the military will be one of the single most important determining factors in how successful his government will be. Khan may have a tough road ahead. He's also inheriting a looming debt and currency crisis and strained relations with the US, Afghanistan, and India. Addressing those issues, coupled with his long-held promise to curb corruption, make for one tall order. So, can he get it done? Certainly his supporters have high hopes. जो आज से 1996 में मैंने शुरू की और आज अल्लाह ने उस मुकाम पे मुझे पहुंचाया है कि एक मौका मुझे दिया है कि मैं वो जो मेरी ख्वाब थी. Do you think Imran Khan is more likely to try to sidestep or work with the military to build his new Pakistan? And if you're from Pakistan, we want to know, what does this victory mean for you? Let us know in the comments. Thanks for watching Now This World. ये थी आज की वीडियो में मुझे जो सबसे पहले चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी और इम्प्रेसिव भी लगी कि एक छोटे से स्पैन में, मतलब 20-22 साल के एक कैरियर में पाकिस्तान जैसी कंट्री का जो मल्टी जियोग्राफिकल डेमोग्राफिक अलग अलग है, फिर हर एक अलग अलग भाषाएं बोलने वाले हैं, इश्यूज हैं,
तो उस कंट्री में 22 साल के पीरियड में और पीएम की पोस्ट पे आ जाना एक काफ़ी मतलब एक बंदे में काबिलियत है, तभी वो इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंचा हुआ है। हर बंदे की दो लाइफ होती है, एक पर्सनल लाइफ होती है जिसमें वो अपने लाइफ में किसी भी इंटरफेयर नहीं करता। अगर शादी की हैं 2-3 तो वो उनकी पर्सनल लाइफ है, तो वो इफेक्ट ही नहीं करती, वो सोसाइटी को इफेक्ट ही नहीं करती। तो ठीक है, मैं इनको बोल सकता हूँ द मोदी ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि जो इनके डेवलपमेंट के एजेंडे हैं, एंटी पॉवर्टी, एंटी करप्शन, एंटी लीडरशिप और इकोनॉमिक राइज, तो ये काफ़ी मतलब बेनिफिशियल स्टेप्स हैं। अगर वो लेते हैं जीतने के बाद, अभी तो जीत चुके हैं, अगर वो लेते हैं अपनी सरकार में तो वो उनके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। और मैं तो कहता हूँ कि टाइम लगता है हर चीज़ में। अगर आप चाहोगे कि 2 साल में डेवलपमेंट हो जाए, बिल्डिंगें बन जाए, रोड बन जाए, पॉवर्टी ख़त्म हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्टेप धीरे धीरे लेने पड़ते हैं। एक एक स्टेप लेने में 2-2 साल, 3-3 साल, कम से कम अगर एक कंट्री को डेवलप करना है कम से कम 40 साल लग जाते हैं पूरा डेवलप होने में। तो जो 2 मिनट चिट्ठी का खेल तो है ही नहीं कि आप 2 मिनट में डेवलपमेंट ले लो। और जो उन्होंने पहले कैंसर हॉस्पिटल खोले, फिर जो मिनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में, हिंदू हो गया, अहमदीस हो गए, क्रिश्चियन हो गए, और भी रिलीजन है, उनको सपोर्ट करना रियली यार हेड्स ऑफ टू यू सर। अगर आप वीडियो देखे हो तो रियली यार आप मतलब आपने इतने, सच में कह रहा हूँ, अगर किसी मिनॉरिटी को आप सपोर्ट करते हो और ओपनली सपोर्ट कर रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम सबको मिलकर रहना चाहिए, तो यार ये काफ़ी काबिल तारीफ स्टेप है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि हम मतलब इंडिया और पाकिस्तान में पीस बना चाहे, और डेवलपमेंट एकदम से नहीं होगी, फुर से आएगी डेवलपमेंट होगी और चले गए 5 साल होगी। कम से कम एक नेता को अगर आप डेवलपमेंट चाहते हो तो 10 साल तो देने ही पड़ते हैं मिनिमम, ताकि जो वो पॉलिसीज लाता है, प्रोजेक्ट लाता है, वो मिनिमम 4-5 साल में तो फ्रेम होते हैं, फिर काम स्टार्ट होता है 5 साल में, जब तब तक वो भेज देते हैं उनको और उनके प्रोजेक्ट वहीं पड़े रहते हैं। तो 10 साल मिनिमम चाहिए, और इतनी आसान नहीं है डेवलपमेंट लाना इतने बड़े देश में। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों ने उनका सपोर्ट किया है, और मैक्सिमम जो पाकिस्तानी यूथ है उन्होंने काफ़ी खुल के सपोर्ट किया है। जो 44% जो वोटर्स हैं, 44% जो वोटर्स हैं वो यंग पॉपुलेशन है, और मैं सोचता हूँ कि जो पाकिस्तान की यंग पॉपुलेशन है वो इमरान खान जी के साथ है। चलिए, अब तो वो 5 साल के बाद पता चलेगा कि क्या प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, क्या पॉलिसी स्टार्ट की है उन्होंने, और उनकी मतलब पॉलिसीज क्या करती हैं, वो तो 5 साल के बाद पता चलेगा। लेकिन जो अभी उन्होंने पहले ही आते ही स्टेप ले लिया है कि कोई भी इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल, सारे इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करेंगे, कोई भी फर्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं करेगा, और जो भी पाकिस्तान की व्हीकल्स हैं, मतलब जो VIP व्हीकल्स हैं, तो उनको ऑक्शन करेंगे शायद वो, और कोई भी गेस्ट हाउस में नहीं ठहरेगा। तो काफ़ी मतलब उन्होंने आते ही स्टेप ले लिया है ताकि वो अपनी जो इकोनॉमी है उनको स्ट्रॉन्ग कर सके। क्योंकि आपको मैंने पहले सुना था 2-3 महीने वाला कि पाकिस्तान में काइंड ऑफ रिसेशन आ चुका है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं शायद वहाँ पे, उनके रुपये की कीमत काफ़ी डाउन हो चुकी है। तो अगर उनको सुधारने के लिए तो उनको बोल्ड स्टेप तो लेने ही पड़ेंगे। जो चाहे जो लोग हैं वहाँ उनको भी थोड़ा सा इफेक्ट करेंगे, और पॉलिटिशियन को इफेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हो कि एक स्ट्रॉन्ग देश बने तो उसके लिए आप उनको बोल्ड स्टेप लेने ही पड़ेंगे, चाहे कोई भी बोल्ड स्टेप हो। तो उनको कम से कम 10 साल का मौका लें। इंडिया में तो हम यही चाहते हैं कि यार आप पीसफुली ग्रो करें, पीसफुली रिलेशन बनाएं, हम दोनों एक दूसरे के ट्रेडिंग सीन, जो क्रिकेट खेलें, तो इन चीज़ों से टेररिज्म ना बढ़ावा दें, ना टेररिज्म को इंडिया में एक्सपोर्ट करें, कि ये हम चाहते हैं। बाकी रही क्रिकेट खेलें, ट्रेड एक्सपोर्ट बढ़े, टूरिस्ट बढ़े, हमारे मतलब इंडियन की काफ़ी फैमिली पाकिस्तान से हैं और पाकिस्तान की काफ़ी फैमिली इंडिया में है। तो ये था आज का वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना ना भूलें।